जाके आपको बैठना है। उसी प्रकार से अन्य जो व्यवस्था है उसमें भी विद्यार्थी भरपूर मात्रा में हमें सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा उनसे उम्मीद रखते हैं। उसी प्रकार से अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी ऊपर में 201, 202, 203 वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि आपकी प्रैक्टिस को बंद कर दीजिए और आप तुरंत धर्मपेट कॉलेज के प्रांगण में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कोई भी विद्यार्थी ऊपर में नजर नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि सारे विद्यार्थियों की प्रैक्टिस हो चुकी है। आप नीचे आइए, थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, इसलिए आप यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। सारे विद्यार्थियों से अनुरोध है जो यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं वे कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, क्योंकि कुर्सी की व्यवस्था आपके लिए की गई है। और आपके सारे मोबाइल को साइलेंट मोड पे पहले डाल दीजिए। कार्यक्रम के दौरान कोई भी मोबाइल की आवाज या घंटी माइक तक नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। स्टेज के सामने की गई है हमारे मान्यवर पधार चुके हैं, ऐसा हमको संकेत प्राप्त हो रहा है। धर्मपेट शिक्षण संस्था की ओर से तथा धर्मपेट मनोहर पांडुरंग देव स्मृति विज्ञान महाविद्यालय की ओर से आपका अभिनंदन। हेलो, चेक चेक 1 आ रही है? हेलो हेलो, हेलो, चेक चेक 1 हेलो हेलो हेलो, चेक हेलो, चेक चेक 1 हेलो, चेक 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 चेक। हेलो, चेक हेलो, चेक चेक हेलो हेलो, चेक 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 चेक। What brings us together in this workshop is our joint commitment to this unique goal. students are requested to settle down and take their seats, and please maintain the decorum. We will be commencing with today's program in the next few minutes. Our chief guest and keynote speaker has just arrived. That is the senior professor, Dr. SHISHIR Despande sir. So please settle down, take your seats. We will be commencing with the program in the next few minutes. Thank you. You are also requested to please put your phone on, either switch off the phone or put it on the vibration mode. To contribute toward this breakthrough project. More than 60% of the cryostatic vessel is finished. So we are celebrating a very important milestone. It's also an important milestone in the ITER project. I remember it's the first time I meet you at the C headquarters. Do you remember in Paris? You come to me to say, India needs a lot of new energy. Could you support us in order to develop it? And I say yes, but maybe you could help us also to support ITER.
also requested to either switch off your cell phones or keep it on the silent mode. Thank you. उसको लाइट चालू कर दूँगा ना ये वाली अभी 10 मिनट में अंदर हो गए डायरेक्ट कर दिया वो आला था पुन्हा कुणाल मित्राचे काही फोटो पाठवून दिले रे
तर पहा ना आता जर असेल वेळ तर हां विकासकडे उद्या जाईल मी उद्या परवा हो पण काहीतरी फोटो पाठवून देत भाऊजीचे वगैरे पोलीसचे नाही ते भाऊजीचे पोलीस नव्हते आलेला पण वेगवेगळं असतात ना गाडीवर जाता तर नाही तो मग त्याला इथं आहे ऑर्डर म्हणजे बाहेर झाला बाहेर म्हणजे कुठे त्याच्या साईडवर चालला वेळ असेल तर आता गाडीवर असेल तर पहा म्हणजे तू गाडी नव्हतं आहे ना बरं बरं तर तिकडे गेल्यावर तुला वेळ भेटला ना थोडंसं फक्त तिच्या भाऊजीचे बायकोचे कपाल आणि पुरीचे हे असे 10 फोटो पाठवले ठीक आहे हां बोल ना बरं बरं करून दे ठीक आहे थांब रे टाकतो टाकतो थांब Students are requested to settle down. We are going to commence with the program in a few minutes. Please maintain the decorum. No talking once the program starts. लाइव आवाज आ रहा टाइम लेता है थोड़ा कुछ सेकंड्स का फर्क रहता है वो तो रहेगा ही देखिए अभी वो दूसरा केबल डालते हैं एक बार किया वो कनेक्ट नहीं हो रहा है इसे डायरेक्ट साउंड किया मैंने चालू इसलिए वैसे हो रहा है The media persons have their seats reserved in the first 2 rows. So whosoever is coming from the media, please come and occupy your seats in the first 2 rows. Thank you. नहीं चालू होने के बाद में नहीं होता फिर वो चालू होने के बाद नहीं होता उनका ही साउंड रहेगा बाकी का साउंड दबून जाते मग Students, I can hear you all till here. I want pin drop silence. उसमें क्या गड़बड़ हो रहा? आवाज इनका डायरेक्ट नहीं ना वायर से नहीं है थोड़ा फर्क हो रहा है। I'm sure you all are aware we have gathered here today for having our Golden Jubilee Science Lecture Series, which is going to be the 4th in the row.
The topic of today's lecture is Role of Fusion Energy in Atmanirbhar Bharat, ITER project and beyond. Our chief guest of today's event has already arrived, and in the next few minutes, we are going to commence with the program. I request you all to either switch off your cell phones or put it on the silent mode. Thank you. मैं वहाँ से दे देता ना, एक बार देख लेता हूँ वो उससे मैं एक बढ़िया बार वो चेक देता हूँ करता ना, हूँ, ठीक है, एक बार पीछे मैं चेक करता हूँ। वो वहाँ से Students are requested to settle down. All the students are requested to settle down. We are going to commence with our program. Hello, check one. Hello, check one. Check. The media persons are requested to come in front and occupy the seats on my right-hand side where special chairs have been arranged for them. Thank you. Students are requested not to use your mobile phones. Please either switch it off or put it on the silent mode. I can see most of you having your cell phones outside in your hands. Please put it in the bags. Thank you.
We are going to commence with the program in the next few minutes. Students, please settle down quickly. Switch off your cell phones or put it on the silent mode. We are going to start our program in the next couple of minutes. Thank you. दीप्ति, उनको ना 7:30 बजे निकलना है, मेरे ख्याल से बुला लेते, देखना ये लोग सब बैठ जाएंगे ना, गो गो गो। बुला लिए हाँ सर। The students are requested to maintain the decorum. We are about to start with today's program. And once the program starts, all are requested to be seated, stay in your places, and nobody will get up and leave this particular ground before the end of the program. I hope I have made myself clear to all the students here. Switch off your cell phones or put it on the silent mode right now.
our honorable dignitaries and members of the management, as well as our chief guest of today's program, Dr. Shishir Deshpande, have started moving towards the podium. All the audience is requested to stand and welcome the dignitaries for today's event. Thank you. I request our IQAC coordinator, Dr. Humne, Vice Principal of Junior College, Mrs. Kashikar, and Supervisor, Mrs. Shobha Jhalke, to escort the dignitaries on the dais. I welcome one and all. Thank you all. So please. A very warm and pleasant good evening, Honorable President, Dharampet Education Society, Advocate Shri Ulhas Aurangabadkar Sir, Chief Guest and Keynote Speaker of today's program for Institute for Plasma Research, Ahmedabad, Senior Professor Shishir Deshpande Sir, Vice President, Dharampet Education Society, Shri Ratnakar Kekatpure Ji, Secretary, Dharampet Education Society, Shri Mangesh Phatak Ji, respected Principal of Dharampet MP Deo Memorial Science College, Nagpur, Dr. Akhilesh Peshwe, all other members of the management, special invitees, research scholars, my colleagues, and my dear students. I, Mrs. Sujata Ali, welcome you all to our Golden Jubilee Science Lecture Series on the topic, Role of Fusion Energy in Atmanirbhar Bharat, ITER project and beyond, and for the release of our Golden Jubilee souvenir. We commence today's program by lighting the holy lamp at the altar of Ma Saraswati, the goddess of knowledge and the arts, the river of consciousness that enlivens creation, the dawn goddess whose rays dispel the darkness of ignorance. Let us together offer our obeisance to Ma Saraswati and seek her blessings on this auspicious evening. I call upon Mrs. Khushali Kodape to recite the Saraswati Vandana. सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं रसिकहृदयवीणा रसिकहृदयवीणा झङ्कारकारिणीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं सुकविसुकृति यशोधवल वसनशालिनीं ऋषिमुनिगण पुण्यवचन रत्नमालिनीं सुकविसुकृति यशोधवल वसनशालिनीं ऋषिमुनिगण पुण्यवचन रत्नमालिनी नवरसमय भुवनमहाशिल्पकल्पिनीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं शारदेन्दुबिम्बशुचि स्मितशुभाननी ललितकलाकलहंसासन विहारिणी शारदेन्दुबिम्बशुचि स्मितशुभाननी ललितकलाकलहंसासन विहारिणी विविध गुणालङ्कारोज्ज्वल विलासिनीं वन्दे
हृदय वीणा रसिक हृदय वीणा झङ्कारकारिणीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीं वन्दे त्वां सरस्वतीं ज्ञानरूपिणीम्. Thank you, Madam. Our former president, late Dr. APJ Abdul Kalam, aptly stated that nuclear power is our gateway to a prosperous future. Nuclear fusion energy has been one of humankind's most important quests for over half a decade, as it promises low carbon, safer than current nuclear energy production methods with an efficiency that can potentially approach 100%. It also raises the prospect of plentiful, clean power. The reactions release no greenhouse gases nor radioactive waste byproducts. ITER in Latin means the way or the path. The International Tokamak Experimental Reactor is being built in southern France with the help of 35 countries, including India, which is one of the 7 partners, along with the European Union, the US, Russia, Japan, South Korea, and China. It is expected to free the globe from the never-ending search for better and more efficient energy sources than fossil fuels. Taking note of the global participation of scientists and engineers, our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, projected ITER to be a perfect illustration of the age-old Indian belief Vasudeva Kutumbakam, meaning the entire world is working together for the betterment of mankind. Adding further that our Indian scientists involved in the development of ITER project highlight India's capabilities for design and manufacturing at most advanced levels, aiming to replicate the energy of the sun. At the onset, I take pride in introducing before you our chief guest and keynote speaker of today's Golden Jubilee Science Lecture Series, Senior Professor at Institute for Plasma Research, Ahmedabad, Professor Shishir Deshpande. Sir did his MSc Physics from Nagpur in 1984 and completed his doctoral research in 1992 at the Institute of Plasma Research, IPR, which is an autonomous R&D organization under the authority of Department of Atomic Energy, Government of India at Ahmedabad. After joining IPR as a faculty member in 1993, he has contributed to fusion research in various roles, leading a group for physics design of tokamak 1995 to 2007, for fusion blanket design 2006 to 08, and as the project director for ITER India 2007 to 2019 for execution of in-kind deliveries from India to ITER, which is a mega science multinational collaboration project under construction in France. He continues working on various aspects of tokamak edge plasma fusion, reactor design, and basic plasma physics at IPR as the head of Fusion Interdisciplinary Science Division. Sir has published over 40 research papers in peer-reviewed journals and is involved in various academic activities. He is a member of the editorial board of the journal Nuclear Fusion, published by the IAEA. He is also the chairperson
for the ITER Science and Technology Advisory Committee for the years 2022 and 2023. Truly an honor to have you amidst us, sir. May I request our Honorable President, Dharampet Education Society, Advocate Shri Ulhas Aurangabadkar sir, and other dignitaries on the dais to welcome and felicitate our chief guest and keynote speaker, Senior Professor Shishir Deshpande, by offering a memento, sapling, shawl, and Shreefar. Thank you all. I now request our principal, Dharampet MPDO Memorial Science College, Nagpur. Thank you, sirs. I now request our principal, Dharampet MPDO Memorial Science College, Nagpur, to give the introductory remarks. Thank you so much, Mrs. Ali. With tribute to Goddess Saraswati and homage to the founding fathers of the institution on this golden occasion, I begin. Today's honorable chief guest and keynote speaker, Senior Professor Shishir Deshpande sir, former Director ITER Project India and Dean Fusion Interdisciplinary Science Division of Institute of Plasma Research. Honorable President of Dharampet Education Society and President of today's function, Advocate Ulhas Aurangabadkar, Honorable Secretary of Dharampet Education Society, Sri Mangeshji Pathak, and Honorable Vice President and Chairperson of our institution, Shri Ratnakarji Kekatpure, Honorable Joint Secretary Deepakji Dudhane, highly respected executive members of Dharampet Education Society, Manya Nikhilji Munde, Honorable former Vice Chancellor, Madam Singh, all the other high officials, in fact, esteemed principals from Dharampet Education Society, respected colleagues, dear vice principals, supervisors, IQSC coordinator, dear teachers, students and staff, and representatives from the media houses. Very precious and prestigious presence of you all have made this evening electrifying. All these years since inception, this institution has contributed to the society through several ways. The institution in the last 50 years has groomed and shaped very renowned military officials, insightful politicians, policymakers, social scientists, educationists, economists, artists, famous award winners, social workers, and extremely highly acclaimed personalities, as you all know. I am glad to share that even Honorable Padma Shri Dr. Dhananjay Sakdev, who dedicated his entire life for the tribal brotherhood of Wayanad, was a student of our institution in 1972. The Jubilee year 1819 began with the inauguration ceremony of the auspicious hands of Pujya Shri Bhayaji Joshi, Sarkari Vaha of Rashtriya Swayamsevak Sangh, and since then we started this special lecture series for students, teachers and researchers. The Golden Jubilee Lecture Series marked its fortunate beginning with a remarkable address by Honorable Vijayji Bhatkar. He spoke on synthesis of science and spirituality. Then we had Professor Shiv Prakash from IISc Bangalore, who addressed us on opportunities and challenges in science education. And last year, Director General CSIR Professor Shekhar Mande spoke on state of the rivers and in the country. And today we have esteemed Professor Shishir Deshpande with us to unravel the mystery of fusion energy.
He is going to enlighten us on the role of fusion energy in Atmanirbhar Bharat, ITER project and beyond. My humble request to Honorable Sir is to use all the three languages or mix them so that, the mystery percolates down to all of us. Dear children, Golden Jubilee Lecture Series is part of the Vijnan Sanskar of our institution, where you get to meet stalwarts and renowned scientists of our nation. These extremely valuable addresses reveal to you how research done with focus, commitment, dedication renders service to the nation and to the world at large. This lecture today should motivate you to take journey within to identify the areas of your interest related to the energy resources, fusion energy in particular. So that, like these highly accomplished scientists, you also will serve all and prove to be a blessing to the society one day. May today's lecture inspire you forever and transform your life into a golden lighthouse of achievements and commitment for the nation. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. I sincerely request our President, Dharampet Education Society, Advocate Shri Ulhas Aurangabadkar sir, to deliver his presidential address. आजच्या कार्यक्रमात ज्यांना ऐकायसाठी फार मोठ्या संख्येने आपण सगळे उपस्थित आहात असे डॉक्टर शिशिर देशपांडे, धरमपेठ शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री रत्नाकरजी केकतपुरे, सचिव मंगेशजी फाटक, इथे उपस्थित असलेले धरमपेठ शिक्षण संस्थेचे सर्व कार्यकारिणीचे माझे सहकारी, धरमपेठ सायन्स कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर अखिलेश पेशवे, ज्यांचं लेक्चर ठरलं होतं पण कोरोनामुळे होऊ शकलं नाही, आणि इथे उपस्थित असलेल्या बहुतेक सर्वांच्या गुरुस्थानी असलेले डॉक्टर कमल सिंग मॅडम, इतर सर्व मान्यवर, नागपुरात शिक्षण क्षेत्रात स्वतःच्या कर्तृत्वाने लौकिक आणि नाव कमावलेले माझे मित्र निखिल मुंडले, आजच्या या कार्यक्रमाला धरमपेठ सायन्स कॉलेज आणि धरमपेठ शिक्षण संस्थेवरच्या प्रेमापोटी उपस्थित असलेले याच महाविद्यालयाचे माजी शिक्षक, विद्यमान शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि मुख्यतः विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, पेशवे सरांनी विनंती डॉक्टर शिशिर देशपांडे सरांना केली की त्यांनी तिन्ही भाषांमध्ये बोलावं म्हणून. मी पडत्या फळाची आज्ञा घेतली आणि मराठीत बोलायला सुरुवात केली. वास्तविक आज संस्थेचा अध्यक्ष या नात्याने बोलण्याचं फार प्रयोजन तसं नसतं. 2019 साली माननीय भैयाजी जोशींच्या उपस्थितीत सुरुवात झालेली ही सुवर्ण महोत्सवी व्याख्यानमाला सातत्याने वेगवेगळ्या विषयांवर आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आयोजित करण्यात येते आहे. धरमपेठ सायन्स कॉलेज हे आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की केवळ साचेबद्ध मार्गाने, ठराविक मार्गाने न जाता विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न करणारं कॉलेज म्हणून आजपर्यंत प्रसिद्ध होतं आणि आजही तेच काम चालू आहे. या कॉलेजने घडवलेले असंख्य विद्यार्थी आज समाजात स्वतःचं नाव आणि कर्तृत्व याच्या भरोशावर एक स्वतःचं वेगळं स्थान प्राप्त केलेलं आहे. पेशवे सरांनी डॉक्टर धनंजय सखदेवांचा उल्लेख केला. आपल्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो की गेल्या वर्षी सेवानिवृत्त झालेले या देशाचे मुख्य न्यायाधीश श्री उदय लळित हे सुद्धा याच महाविद्यालयाचे विद्यार्थी होते 1 वर्ष. असे असंख्य चांगले विद्यार्थी जे आज समाजात स्वतःच्या कर्तृत्वाने नाव कमवलेलं आहे, असे विद्यार्थी घडवणारं ही कॉलेज आणि असं कॉलेज चालवणारी ही धरमपेठ शिक्षण संस्था ही समाजाच्या वेगानेच पुढे जाते आहे. टेक्नॉलॉजीज नवीन आल्या, विषय नवीन येतील, चॅलेंजेस नवीन येतील आणि असे सगळे चॅलेंजेस
स्वीकारून टेक्नॉलॉजीज मध्ये स्वतःला मोल्ड करून विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त काय आणि कसं देता येईल याचा प्रयत्न या शिक्षण संस्थेत, या महाविद्यालयात इथले प्राचार्य आणि त्यांचे सगळे सहकारी शिक्षक करत असतात. आणि त्याचाच एक भाग, एक उपक्रम म्हणून ही सायन्सची व्याख्यानमाला आपण सुरू केली आहे की दरवर्षी विद्यार्थ्यांना विज्ञान क्षेत्रात काय नवीन घडतं आहे त्यासाठी त्या क्षेत्रातल्या अधिकारी व्यक्तीला बोलवायचं. आणि केवळ ही एक भाषणाची, व्याख्यानाची औपचारिकता न राहून इथे असणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी स्वतःचं करिअर घडवण्यासाठी, स्वतः आयुष्यात मला पुढे काय करायचं आहे याचा विचार करण्यासाठी अशी व्याख्यानं अतिशय मार्गदर्शक राहतील असे विषय निवडले जातात. आणि दीपस्तंभासारखे ज्यांच्याकडे पाहून स्वतःचं करिअर करण्याची प्रेरणा मिळेल असे व्यक्ती, असे व्याख्याते धरमपेठ सायन्स कॉलेजच्या व्याख्यानमालेत आपण बोलवत असतो. आजचं व्याख्यानसुद्धा हे त्याच्यातलं 4थं पुष्प आहे. मी डॉक्टर देशपांड्यांचं धरमपेठ शिक्षण संस्थेच्या वतीने, माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या वतीने स्वागत करतो. आणि मला असं वाटतं की आज आपण सगळ्यांनी त्यांचं व्याख्यान जरूर ऐकावं, पण त्यातून पुढे जाऊन आपण आत्मनिर्भर भारत, आपण नुसत्या ज्या गोष्टी ऐकतो, बोलतो, आत्मनिर्भर भारत, आपला देश आणखीन पुढे कसा जाईल त्या दृष्टीने माझं त्याच्यात सहकार्य कसं राहील, माझं कॉन्ट्रीब्युशन काय राहील, ज्या क्षेत्रात मी शिकीन, ज्या क्षेत्रात मी पुढे प्रगती करीन, ज्या क्षेत्रामध्ये माझा व्यवसाय मी करीन, नोकरी करीन, त्या प्रत्येक क्षेत्रात मी आत्मनिर्भर भारत करण्याच्या दृष्टीने कसा प्रयत्नशील राहू शकतो या दृष्टीने सगळ्यांनी विचार करावा. धन्यवाद. Thank you so much, sir. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Dharampet MPDO Memorial Science College, Nagpur, got its own entity in the year 1968, and today the tiny seed has blossomed into a magnificent and glorious tree. Perseverance first and then perfection is the key to success. The souvenir team of our college took up the immense and noteworthy task of compiling the Golden Jubilee Souvenir Yatra and feel extremely elated and proud to release the souvenir this wonderful evening. A great souvenir is a singular, tangible memory keeper, an almost metaphysical object. Our souvenir Yatra tells an incredibly specific story. The story of the inception of this great institute from a tiny seedling to a blossoming tree. It also highlights the achievements of our students, both in the academic and sports arena, as well as the loads of wishes and blessings our founders, honorable members of the management, both former and present, our patrons, and above all, our well-wishers have bestowed upon us. It also includes the memories, special moments and experiences shared by our present and former teaching and non-teaching staff and our very dear alumni. The Souvenir Yatra will facilitate in keeping our memory alive and remind us of the dedication and efforts put in by our forefathers and stalwarts of this great institution to make this temple of learning an edifice to be proud of. I earnestly request our President, Dharampet Education Society Advocate Ulhas Aurangabadkar sir, our Chief Guest and Keynote Speaker, Senior Professor SHISHIR Despande sir, and all dignitaries on the days to release the Golden Jubilee Souvenir Yatra. I also request our IQAC Coordinator and Head of the Department Botany, Professor Pitambar Humne, Mrs. Ruma Kapre, Ms. Vishakha Kaskedikar, and Mrs. Yogita Acharya to come on the stage. I humbly entreat our Vice Principal Junior College, Mrs. Vinayaka Shikar ma'am, and Supervisor, Mrs. Shobha Jhalke, to come forward as well for the release of the souvenir.
Thank you all. Without further ado, I now request our respected chief guest and keynote speaker, Senior Professor Shishir Deshpande sir, to enlighten us with his lecture on Role of Fusion Energy in Atmanirbhar Bharat ITER project and beyond. Sir. With my salutations to the goddess of knowledge and my state of being humbled at being such a prestigious institute and with such accomplished people on the dais, off the dais. My Guru, what more luck can there be speaking before Dr. Ms. Kamal Singh and colleagues, friends, staff, and thank you all for being here, inviting me. It's an honor. आणि तसा मी नागपूरला शिकलो. माझं MSc मास्टर्स इथलंच आहे. आणि आय एम रिअली इम्प्रेस्ड especially with Sujata ji's background research on ITER. तर छोटीशी आठवण त्याची म्हणजे इथे डॉक्टर दीक्षित, वसंतराव दीक्षित, one of the members of this esteemed institution, हे PhD करत होते 1982 मध्ये मी जेव्हा इथे आलो तेव्हा. आणि ते मॅडम सिंगकडे PhD करत होते. तर मॅडम सिंग मला ओळखत पण नव्हत्या तेव्हा, कारण आय हॅड नॉट इवन रिअली जॉईन्ड द कॉल. वाय डोंट यू जॉईन रिसर्च, असं सिम्पल इन्व्हिटेशन. आणि हे आमच्या मनातही होतं रिसर्च करायचं म्हणून. हां, इनके साथ जाओ असं म्हणून मी वसंतरावांच्या स्कूटरवर बसून जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक्सरे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इकडे तिकडे असं फिरून. सो दॅट इज हाऊ आय केम टू नो व्हॉट इज अ PhD, व्हॉट इज अ thesis, हाऊ इज वन डुईंग रिसर्च. आय सॉ हर लॅब and she used to be there until late hours. All her students were also be like that, and many people in the department were like that, probably everywhere. So I was very lucky to be directly inducted into the sea of research. And it is only, you can say with great luck, but you, students, don't have to be wait to be lucky, because you are at a great place. And you should fully exploit this opportunity to get exposed to latest in research, because हमने जब ज्वाइन किया था तब ना YouTube था ना Google था. So inspect जर्नल्स होते थे, उसमें देख के you have to find out papers. I remember madam students. So we would go to some library, बड़े बड़े जर्नल्स खोल के you have to find the paper कि आपके फील्ड का कौन सा पेपर रेलेवेंट है. उसको लेके उस ऑथर को पहले चिट्ठी लिखो. वो चिट्ठी भी हम मतलब विल गो बाय पोस्ट. सो 10 days उसमें, फिर 10 days आने में, फिर आप पेपर पढ़ेंगे, फिर रिसर्च होगा. टुडे यू जस्ट गूगल. टुडे यू हैव सच वंडरफुल फैसिलिटीज. Just Google.
you will see several dashboards. Jacks है, so many different dashboards are. Click on that, आपको पूरा citation index मिलेगा. Use the Mendeley database, directly journal में import हो जाएगा. You can do online plagiarism checks. You can upload your manuscripts on archive. So many facilities and great speed. So यही मौका है. और बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर मैं यंग लोगों को बता दूं कि टेक्नोलॉजी जो है एक जंग है और टेक्नोलॉजी का मकसद है एक नए समाज की निर्मिति जिसमें लोग एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को सहारा दे, वो टीम मेंबर्स बने, एकजुट बने, सबको डिसेंट डिग्निफाइड लिविंग का मौका मिले, छोटे से छोटा इंसान भी एक वैकेशन ले पाए. तो हमारी ये जो जंग है ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, इसके लिए टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करना है. और ये जंग ऐसी है जिसमें आपको हर हाल में किसी भी कीमत पे जीतना है, क्योंकि इसमें बाकी लोग, बाकी देश भी उसी शिद्दत से, उसी जज्बे से लड़ने वाले हैं और वो कोशिश करेंगे हम आगे ना बढ़ें. यू हैव टू रिमेंबर दिस. और उसके लिए वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं. मैं आपको कभी बताऊंगा. आपने जैसे ही मौका दिया उनको, वो तुरंत आपकी अपॉर्चुनिटीज काट देंगे और ये बड़ा ही स्मूथली, पॉलिटिकली, सॉफ्टली, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड रिमेंबर यू हैव नो ऑप्शन. You have no option. So we have to move in that direction where we use technology, as our Prime Minister says. You have to remember this word, Antyodaya. You remember in your Pratigya books, there was a very nice article on Gandhiji's talisman. So if you have seen movie Gandhi, you might have seen, I think Maulana Azad asked him, how do we know we are successful, whether we should take this route or not? So Gandhiji tells him, look, you just ask yourself कि एक long queue है, आप करते कुछ डेवलप करते जा रहे हैं, वो लास्ट मैन इन द क्यू जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपको वो सोचना है. The poorest man in the queue who's standing at the end waiting for you to receive those arms, those benefits of your technology, of your development, is he receiving that or not? So we have to remember that when projects deliver on time, people get benefits on time. Not delaying is a good thing. Delaying is a bad thing. And today we don't have an audit of time. We have audit for everything, but no one asks why some projects were not delivered. Therefore, not only you people should do science, but you should do great project management. We have very few project managers in the country who are technocrats, no management and no science. So you will have to go into a multidisciplinary ambit where your prowesses are revealed in both management and in science. So ठीक है, now I will begin. I will use some mixed language, so excuse me for that. We can start our slide 1. So let me, while this thing goes on, so ITER is a project, Sujata ji has very nicely explained. So ITER है एक reactor है basically, and you can say it is a nuclear reactor, but it is a reactor with a difference. It is not a fission reactor, it is a fusion reactor. Fusion means joining.
पॉइंटर ठीक पॉइंटर तर नाही दिसणार. सो प्लाझ्मा हा शब्द नेहमी येणारा आहे. प्लाझ्मा इज बेसिकली a collection of charged particles, but हमको दिखता नहीं लेकिन हर जगह है. Plasma is everywhere. So if you remember your old or modernized version of Twinkle Twinkle Little Star, you can try to remember that it is Twinkle Twinkle Little Star, we all know what you are. The nuclear furnaces in the sky throwing ash by and by. This, although this is a very interesting way of telling it, it captures a lot of stuff in it. And so this, what is this nuclear furnace? It is furnace where hydrogen is burning. And although we are closest to sun and sun is burning hydrogen, let me also tell you that we understand very little of our own sun scientifically. It is still a mystery. Although it is that close and although we know so much about it, it is still an incredible mystery. So people who do great solar physics, some of you might work on the Aditya probe or may go to the Parker probe, some of you may work on James Webb telescope. So the world is changing very, very fast, and you all need to be abreast with knowledge. So प्लाझ्मा हा सगळीचकडे आहे. इथे एक्स ॲक्सिसवर नंबर डेन्सिटी लिहिली आहे आणि वाय ॲक्सिसवर टेम्परेचर, आणि त्या कॉर्डिनेट्समध्ये तुम्हाला सोलर कोरोना असा मध्ये दिसतोय. सोलर कोरोना म्हणजे सूर्याचा मुकुट. कोरोना हा आपण मुकुटला शब्द वापरतो आणि तिथून आपल्याला सगळा प्रकाश मिळतो. परंतु कोरोनाला कसं हीट करता येईल ही अजूनही मिस्ट्रीज आहे. पण आपला जो इंटरेस्ट आहे तो आहे मॅग्नेटिक फ्युजन. म्हणजे सोलर कोरोनाच्या थोडं वरती मॅग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्युजनमध्ये तुम्हाला एक असा डोनट या सायकल ट्यूब सारखा एक ऑब्जेक्ट दिसेल. दॅट इज अ चेंबर. इट इज बेसिकली ए स्टेनलेस स्टील चेंबर ज्याच्यामध्ये आपण ड्यूटेरियम ट्रिटियम गॅसचा प्लाझ्मा तयार करून फ्युजन असा आपला एम आहे. तर ज्या एनर्जीज बद्दल आपण बोलतोय, ॲट दोज एनर्जीज मॅटर विल नॉट रिमेन जस्ट इन द फॉर्म ऑफ ॲटम्स. ॲटम्सचे तुकडे होऊन इलेक्ट्रॉन्स आणि न्यूक्लियस वेगळे होतील आणि ते इतकं हॉट डेन्स मॅटर आहे की इट विल नॉट रिकम्बाईन. आपल्या मनामध्ये सहज प्रश्न उभा राहील की वाय डोंट इलेक्ट्रॉन्स अँड protons combine back to form atoms. That is not possible at that energy because it's too energetic. They are all moving, and the chances of their forming a neutral atom exist, but those chances are amongst many. For example, scattering वगैरे. सो एक प्लाझ्मा आपल्या रोजच्या लाईफमध्ये पण ट्यूबलाईटमध्ये पण प्लाझ्माच आहे. ओके, वेल्डिंग टॉर्चमध्ये प्लाझ्मा आहे. फ्लेम्स जे आहेत त्या पण पार्शली प्लाझ्माच आहेत. बेसिकली इट्स कलेक्शन, बट इन ए नॉर्मल फ्लेम खूपच जास्त न्यूट्रल ॲटम्स असल्यामुळे आपण त्याला प्लाझ्मा नाही म्हणणार, पण देर इज सम फ्रॅक्शन ऑफ आयनायझेशन. इनफॅक्ट तुम्हाला माहिती असेल की मेघनाद सहा, यू ऑल नो अबाउट ग्रेट फिजिसिस्ट, त्यांनी जे इक्वेशन दिलं आहे ते अजूनही फाउंडेशन इक्वेशन म्हणून प्लाझ्मा फिजिक्समध्ये वापरलं. त्याला सहा इक्वेशन म्हणतात. सहा यांनी हे दाखवून दिलं की एका नॉर्मल किंवा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये किती आयन्स, किती इलेक्ट्रॉन्स, किती न्यूट्रल्स थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियममध्ये राहतील. So if there is thermodynamic equilibrium, you can tell how many ions, how many electrons. In fact, you will be surprised to know that even now in this stage, in this air also there is a very trace population of electrons.
पण ती अगदी तुरळक आणि आपल्याला न जाणवणारी पॉप्युलेशन आहे. ती पॉप्युलेशन कशामुळे पण बनू शकते. कॉस्मिक रेज आर पासिंग थ्रू अस कॉन्स्टंटली. तर अशा अनेक गोष्टीमुळे आपल्या आजूबाजूला सुद्धा हा एक ट्रेस अमाऊंट असतो. परंतु जेव्हा आपण एक चेंबर निर्वात करतो, इव्हॅक्युएट करतो, when we evacuate the chamber and then start creation of plasma, then that small population of electron grows exponentially, and that is what creates plasma by avalanche process. So तुम्हाला जर बेस्ट एक्झाम्पल आणि डॅशिंग एक्झाम्पल प्लाझ्माचं पाहायचं असेल तर दॅट इज वीज. आपण म्हणतो वीज पडली. सो यू शुड ऑल सी, यू आर नाऊ ॲक्सेस टू गुगल. So you should see Feynman lectures on physics, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला you can try to see how he explains the lightning. कसा स्टेप असतं, स्टेप लीडर म्हणजे काय असतं, स्टेप लीडर कसा प्रॉपगेट होतो, खालून वरती इलेक्ट्रिसिटी जाते की वरून खाली येते, who creates the positive charges above, what creates a ground bottom. You must have seen recent news, अगदी रिसेंट न्यूज आहे की एका लेझर बीमनी इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे विजेचा जो पाथ होता पृथ्वीवर पडण्याचा तो चेंज केला. तो का बरं चेंज केला? आपल्याला बिल्डिंग्स वाचवायच्या आहेत. बिल्डिंगवर आपण लाइटनिंग कंडक्टर ठेवतो, तिथे ती वीज त्या इलेक्ट्रिक फील्ड ॲज यू नो बेसिक फिजिक्स पॉइंटेड स्ट्रक्चर्समध्ये टॉप हाय लेवल इलेक्ट्रिक फील्ड्स राहतील. व्हेरी सिम्पल. मग तिथे ती पडणार. मग त्याच्याऐवजी जर आपण एक मोठा लेझर बीम हाय पॉवर जर वरती फेकला तर त्या लेझर बीमने जे थोडंफार आयनायझेशन होईल, जो कुछ आयनाइजेशन उसमें हो सकता है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा प्रोटॉन्स in that beam line, that will attract the electricity and it will fall at a place where you want. So you are sometimes you might be able to design devices which can prevent disasters. आपण आता पुष्कळदा ऐकतो काही ठिकाणी किती वीज पडून नुकसान होतं, पण you can begin to see how charge particle dynamics, plasmas, electricity get connected. So coming back, we have a powerful range. Plasma is the most ubiquitous object in the universe. If you add up everything against plasma, you will not even see that other thing. It is just everywhere. There are 10 to the, let's say 11 galaxies, and each galaxy has 10 to the 11 stars, and so we have plasma everywhere. And then stars are fusing, creating new stars, which is again plasma. Only the debris of a fused star, which is thrown up in supernova, that is becoming Earth. So now let us quickly go to so stars. Why do the stars shine? हा एक मोठा प्रश्न Hans Bethe, one of the best and well-known physicists who also worked in the Manhattan Project, and he solved it. And Hans Betheचे पेपर्स जे आहेत they used to come late, पण एकदा त्यांनी तो पेपर लिहिला की ते फील्डच संपून जायचं. आपले चंद्रशेखर सारखं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर पेपर लिहिल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये पुढे पेपर यायचेच नाही, कारण तो पेपरच इतका जबरदस्त असायचा. तर ती क्वालिटी असायला पाहिजे. हान्स बेथे टूक लॉट ऑफ टाइम बट डिड अ ट्रिमेंडस जॉब, आणि हा खूप फेमस पेपर आहे. आणि मग ऑफकोर्स त्यांना नोबेल प्राइज मिळाला. ही एक्सप्लेन द रिझन फॉर स्टार फायर. परंतु फ्युजन होणं कठीण काम आहे, कारण दोन प्रोटॉन्स पॉझिटिव्हली चार्ज त्यांनी एकत्र येणं म्हणजे दे आर ऑलरेडी रिपेलिंग इच अदर. मग ते रिपल्शन ओव्हरकम करणं आणि ओव्हरकम करून मग ते फ्यूज होणं इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और वॉज थॉट नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल. So but this mystery got solved very interestingly, because George Gamow was working on a problem of the other kind. Alpha particle न्यूक्लियस मधून कसा बाहेर येतो हा एक मोठा प्रश्न होता. आणि यू विल नॉट बिलीव्ह इट,
how many attempts that alpha particle makes. If you calculate it, think of a vessel ज्याच्यामध्ये एक पार्टिकल मिलियन्स नाही झिलियन्स ऑफ टाइम्स त्या वॉलवर स्ट्राईक करतो आणि मग एक चान्स त्याला बाहेर निघायचा मिळतो. सो these chances are decided by the ratio of energy in the exponent. त्या अल्फा पार्टिकलची एनर्जी, कूलम बॅरियरची एनर्जी, आणि ती एनर्जी त्याची कमी आहे. रिमेंबर, दिस इज लाईक ए लॉंग जम्प वेअर एक क्वांटम लॉंग जम्पचा आपण गंमत जर घेतली तर सपोज देर इज ए लॉंग जम्प पर्सन बट ही इज व्हेरी क्रिएटिव्ह. ही डझंट वॉन्ट टू गो ऑल द वे अप टू दॅट हाईट. ओके, सो ही डिसअपियर्स by tunneling and simply appears on the other side, and you will still have to give him award because he has not violated any rules. So this going across the barrier becomes possible only because of quantum mechanics. Therefore, next time you see quantum mechanics and mysteries of quantum mechanics, remember you are seeing it in everyday life. When you sit next to an alpha source, if you do radioactivity, remember that you are seeing a quantum demonstration of Gamo's theory, where he shows how a particle can tunnel through. So, the fact that these great explanations existed, then fusion is an amazing cosmic manufacturer. If you just go on adding hydrogen to hydrogen, get helium, helium to helium, go on adding, you can generate almost entire table. हा जो टेबल तुम्हाला दिसतोय याच्यामध्ये हे बिग बँग थिअरी, बिग बँगचे जे फक्त दोनच ब्लू तुम्हाला स्क्वेअर्स दिसतील, हायड्रोजन आणि तिकडचा हेलियम म्हणजे तो ड्यूटेरियम. ॲक्च्युली हेलियम नाही तो. आणि मग जे तुम्हाला हे कलर्स दिसत आहेत ना, दे आर ऑल क्रिएटेड बाय न्यूक्लिअर फ्युजन इन द कॉस्मॉस. आणि देर आर सम एलिमेंट्स आपण जे ग्रे कलरमध्ये पाहतोय जसं की TC, देन प्रोमेथियम आणि अमेरिशियमची सिरीज जी आहे, त्या ग्रे कलरने आपल्याला उगीच असं फुशारकी मारल्यासारखं वाटेल की ह्युमन मेड आहेत ते, पण वी हॅव टू जस्ट रिमेंबर दॅट ह्युमन्स वेर ऑल्सो मेड बाय फ्युजन. सो फायनली एव्हरीथिंग वॉज मेड बाय फ्युजन. सो हिअर यू कॅन सी द मिस्ट्री. वाय इज दिस मिस्ट्री? बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो आहे तो असा राइज होतो आणि मग असा फॉल होता है. तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अगर मिलाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ड्रॉप्स. इफ यू ऐड मोर, बाइंडिंग एनर्जी ड्रॉप्स मीन्स per nucleon it is increasing, but it is potential energy, therefore it is negative. So you can go on adding matters. एखाद्या बसमध्ये जास्त लोक बसल्यानंतर ती कशी स्वस्त पडते आपल्याला, त्याच्यासारखं तो थोडासा लॉजिक आहे. इट्स ए इकॉनॉमी ऑफ पॅकिंग. परंतु ही इकॉनॉमी थोड्या वेळानंतर खूपच जास्त क्राउडिंग होतं तिथे आयरन पाशी, आणि देअरफॉर इट इज नाउ नॉट पॉसिबल टू कॅरी सो मेनी पीपल अलॉंग. But till that time, everything is very nice and you continue to get energy. And that is how we get energy, luckily. So thanks to this rising part of the energy to give us all that energy that we wanted. So DT fusion reaction, I just said that deuterium and tritium fuse. They are basically brothers of hydrogen. Isotopes आहेत हायड्रोजनचे. एकच प्रोटॉन आहे, पण एका ह्याच्यामध्ये एक न्यूट्रॉन आहे आणि एका ह्याच्यामध्ये दोन न्यूट्रॉन्स आहेत. दॅट्स व्हॉट यू सी. आणि देन इट रिलीजेस अ हेलियम न्यूक्लियस विच इज अन अल्फा पार्टिकल अँड अ न्यूट्रॉन. बट notice the last point, 17.6 mega electron volts, and consumption is just around 20 kilo electron volts. So we have almost, or 40 kilo electron volts, we have a factor of 500 in multiplying. This is terrific. You may compare this with your carbon burning. आपण एक कार्बन आणि एक ऑक्सिजन जोडून मुश्किल 0.1 EV अशी टाईपची एनर्जी घेणार. दॅट इज कोल बर्न. बट दिस इज बाय ग्रेट फॅक्टर, आणि दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स इफ वी कॅन कंट्रोल इट. सो दिस इफ इज व्हेरी बिग इफ, अँड वी आर हियर and researchers are here only for that if. Okay.
So deuterium means two particles discovered in 1931, tritium was 1934 in the DD reactions. It's a radioactive isotope, but it is nothing to, it's something to worry about, but tritium is also used in safety. For example, tritium भरलेली एक ट्यूब आणि त्याला जर आपण फॉस्फरचं कोटिंग दिलं आणि ती ट्यूब अशी ठेवून दिली तर जोपर्यंत ट्रिटियम त्याच्यामधला डिके होत राहील तोपर्यंत ती ट्यूब लागलेली राहील. आणि ही कुठे यूज होईल? कॅन यू गॅस? जिथे पॉवर नाही, जिथे कुठलाच ॲक्सेस नाही, जिथे कुठलंच कनेक्शन देता येत नाही आणि ज्याची रिलायबिलिटी 100% पाहिजे, कधीच ती बंद नाही झाली पाहिजे. सो रिमेंबर, coal mines, rescue operations, hazardous objects, undersea objects. Okay, so at many places where human beings dare, these lights are very important. Tritium is also used for hydro tracking. It's very useful stuff. आणि 12.5 वर्षांचं त्याचं हाफ लाईफ आहे. It becomes helium-3, a harmless gas basically. Of course, tritium is very exactly identical to hydrogen आणि hydrogen matter सोबत तो मिक्स होऊ शकतो. Therefore, there is a whole lot of care you have to take about tritium. So let's go quickly. So ही fusion reaction का होते? This is all I will go through quickly. याच्यामध्ये as you can see D आणि T जर आपण राउंड फिगर मध्ये लिहिले 2 - 994, 3 - 6284 आणि इक्वल्स अल्फा. ह्या इथे अल्फा जो आहे तिथे तुम्हाला दिसेल की जास्त एलिमेंट्स, जास्त न्यूक्लिया तुम्ही पॅक केले, 4 झाडांना पॅक केला तुम्ही इन्स्टेड ऑफ 2. देअरफॉर तो 4- तो ड्रॉप जो आहे तो जास्त आहे. ड्रॉप मीन्स व्हॉट? समजा जर तुम्ही 4 न्यूक्लियॉन्स वेगवेगळे घेतले असते तर ते 4 आले असते, पण ज्यांना तुम्ही एकत्र केलं तर त्यांची एनर्जी थोडी कमी होते. तर तो जो ड्रॉप आहे तोच आपल्याला रिलीज होऊन मिळतो आहे. हा D+T मध्ये मायनस दिसत आहे तुम्हाला, पण हिलियममध्ये खूप सारा मायनस आहे बघा. सो फायनली द नेट मायनस इज अबाउट 2% ऑफ द प्रोटॉन्स रेस्ट एनर्जी. आणि इथे हायड्रोजन सनमध्ये कसा बर्न होतो आहे आणि पृथ्वीवर लॅबोरेटरीमध्ये आपण D आणि T बर्न करणार आहे. त्याचं थोडंसं इथे शॉर्टमध्ये लिहिलं आहे. सो फ्युजन रिॲक्टरचं वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे? सो चेंबरमध्ये आपण ड्यूटेरियम ट्रिटियम गॅस भरणार, तो डिस्चार्ज स्ट्राईक करणार एखाद्या डिस्चार्ज ट्यूबसारखा. जसं आपण ऑन ऑफ करतो तसं इलेक्ट्रिक फील्डनी तो डिस्चार्ज स्ट्राईक करणार, तो प्लाझ्मा तयार होणार. मग प्लाझ्माला हीट करायचं आणि हीट केल्यानंतर त्याच्यामधले जे कोलिजन्स होतील त्यांनी त्याच्यामध्ये चान्सेस आहेत फ्युजनचे, ते फ्युजन रिॲक्शन स्टार्ट होणार. ऑफकोर्स त्या फ्युजन रिॲक्शनपासून आपल्याला अल्फा पार्टिकल मिळेल, एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल. त्या अल्फा पार्टिकलची एनर्जी जर आपण परत वापरली रिॲक्टरमध्ये तर ग्रेट, मग आपल्याला बाहेरून उष्णता द्यायची गरज नाही. त्याच्यासाठी एक वेट वूड ॲनॉलॉजी म्हणतात. वेट वूड ॲनॉलॉजी म्हणजे एक अशी भट्टी आहे, त्याच्यामध्ये आपण ओलं इंधन किंवा ओलं लाकूड जाळतो आहे असं इमॅजिन करायचं. आता ओलं लाकूड टाकलं आपण तर पहिले ते ओल्या लाकडाला वाळवावं लागेल, म्हणजे भट्टीची थोडीशी एनर्जी त्या लाकडाला वाळवण्यात जाईल. नंतर ते वाळलेलं लाकूड जळेल आणि ते आपल्याला जास्त एनर्जी देईल. तर जेव्हा हे इकॉनॉमिक्स आपलं बरोबर होईल, जेव्हा आपल्याला वाळवण्याची एनर्जी जी आहे ती कमी राहील आणि मिळणारी जास्त राहील, तेव्हा आपण इकॉनॉमिकली करेक्ट पोझिशनला पोहोचू. परंतु त्याला मॅथमॅटिकली लॉस अँड क्रायटेरिया वगैरे आपण असं म्हणतो, पण बेसिकली पॉईंट हा आहे की जितकी एनर्जी आपण जनरेट करतो आहे ती जनरेट करण्यासाठी आपल्याला काही एनर्जी प्लाझ्माला द्यावी लागणार आहे. आणि जेव्हा हे बॅलन्स बरोबर होईल, म्हणजे जनरेटेड एनर्जी आणि लॉस्ट एनर्जी जेव्हा बरोबर होईल, त्याला आपण ब्रेक इव्हन असं म्हणतो. म्हणजे जितके रुपये लावले तितके मिळाले. इट इज ऑफ नो यूज, कारण तुम्हाला पुढे जायचं आहे. सो इन ऑर्डर टू गो हायर you have to go to ignition where you don't have to put it. Then plasma itself funds its own energy. But in that process,
remember you are losing a tritium atom each time. So each time the fuel atom, deuterium the abundantly available hai sea water मध्ये. So no geographical boundaries, and if it works, no dependence on problematic countries. A major problem hai geopolitical dependence of fuel and wars are all connected to energy and resources. So as soon as you can unleash a new technology which uses seawater, then you are totally changing the geopolitical game and bringing equality, affordability, environmental impact. So that is why we need to pursue this area. So deuterium will come from seawater, tritium. So nuclear सायन्सचे स्टुडंट्स लगेच सांगू शकतात की जर लिथियमवर आपण न्यूट्रॉन टाकला तर आपल्याला ट्रिटियम मिळेल. सो द सोल्युशन इज देअर. प्लाझ्मा त्याला सराउंड करायचं लिथियमनी किंवा लिथियमच्या ब्लँकेटनी, आणि प्लाझ्मापासून निघणारे न्यूट्रॉन्स ट्रिटियम जनरेट करतील. तेच ट्रिटियम आपण एक्स्ट्रॅक्ट करून परत रिइंजेक्ट करू. सो प्लाझ्मा इज गिविंग अस एनर्जी इफ वी डू इट राईट, आणि इट इज ऑल्सो जनरेटिंग फ्युएल ऑन द फ्लाय. असं नाही की ते तुम्हाला साठवून ठेवायचं. इट्स ऑल हॅपनिंग इन द लूप. मे बी इट विल टेक रफली अ डे टू प्रोसेस. सो इफ वी कॅन गेट टू दॅट आर्ट, then it is great. And today's talk is about whether we are reaching there. So let us go quickly. So the challenge is controlling the plasma. Plasma is a beast. It has awareness. त्याच्यामधले पार्टिकल जे आहेत ते न्यूट्रल ॲटम सारखे नाही आहेत की ते एकमेकावर आदळल्यावरच एकमेकाला दिसतील, असं नाही आहे. दोज पार्टिकल सी इच अदर फ्रॉम अ व्हेरी लॉंग डिस्टन्स. दे आर चार्ज. दे आर कूलम्बिक अट्रॅक्शन्स. Coulomb force is 1 by r square. Coulomb force has infinite range. It hardly matters where the particles, they are still seen. याचा अर्थ काय की people or particle can group. They can form groups of interaction. They can form waves. They can be unstable. They can try to escape confinement. So that is the creativity of the plasma that we have to beat. And for that we have to design a cage. And for that the only solution is magnetic field. So plasma's capacity to stay hot is very, very crucial. कारण त्याच्यापासून जर एनर्जी लॉस लवकर झाला तर मग आपल्याला खूप सारी एनर्जी त्याच्यामध्ये टाकावं लागणार आहे. and it is not economical. So plasmas with a good thermal insulation, plasma which can hold energy for a long time, is what we are looking for. So टोकामॅक म्हणजे एक रशियन वर्ड आहे, आणि तो रशियामध्ये अँड्रे सॅखारोव आणि टॅम या दोन सायंटिस्टनी इन्व्हेंट केलेला आहे. आणि 1952-58 मध्ये जेव्हा जिनेवामध्ये पीसफुल युसेस ऑफ ॲटॉमिक एनर्जीची कॉन्फरन्स होती, तिथे फर्स्ट टाइम सरप्राइजिंगली रशियानी एकदम अनाऊन्स केलं की वी हॅव अचीव्ड 1 million degrees टेम्परेचर. त्यावेळेला अमेरिकन सायंटिस्ट वेअर वर्किंग ऑन अ कन्सेप्ट कॉल्ड स्टेलरेटर, आणि रशियन्स वेअर वर्किंग ऑन टोकामॅक. नंतर मग टोकामॅक कन्सेप्ट सगळीकडे अडॉप्ट झालं, बिकॉज इट्स रिअली गुड, बिकॉज त्याला एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड आणि इंटरनल करंट्सनी येणारं अजून एक मॅग्नेटिक फील्ड अशी जोड मिळते, आणि ते हेलिकल फील्डमुळे बेस्ट कन्फाइनमेंट मिळते. हा बेसिकली सार आहे या सगळ्या गोष्टीचा. सो पार्टिकल्सला कन्फाईन करून ठेवणे नंबर 1 जॉब. नंबर 2 त्याच्यामधली हीट पण कन्फाईन करून ठेवणे. यू मे नॉट लूज पार्टिकल बट यू मे लूज हीट, रिमेंबर दॅट. आणि नथिंग कॅन टीच यू दिस बेस्ट फ्रॉम अदर दॅन सॉलिड स्टेट फिजिक्स अँड डायमंड phonons. So there are so many things for you students to learn and understand the mysteries of from your day-to-day syllabus. Okay, so here is what you are seeing is a famous physicist on the left, Dr. Boris Kadomtsev, आणि त्यांचं हे पुस्तक आहे टोकामॅक प्लाझ्मा कॉम्प्लेक्स सिस्टम. आणि राईट साईडला जो ग्राफ आहे तो महत्त्वाचा आहे. तो ग्राफ काय आहे
ऑन द एक्स ॲक्सिस आपण टाव, ग्रीक लेटर टाव लिहिला आहे, दॅट इज टाईम. आणि ऑन द वाय ॲक्सिस पण आपण टावच लिहिला आहे, अगेन इट इज टाईम, अँड वी आर प्लॉटिंग टाईम अगेन्स्ट टाईम. तसं थोडंसं क्रेझी वाटतं ते, पण नीट पाहिलं तर तुम्हाला दिसेल की वाय ॲक्सिसवर जो आहे ना तो एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट आहे, आणि एक्स ॲक्सिसवर थिअरिटिकल प्रेडिक्शन आहे. आणि हे दोघंही बरोबर मोरलेस एका प्रेडिक्शनने चालले आहेत. आणि हाऊ मेनी डिव्हायसेस, हे सगळे डिव्हायसेस जगामधले US, रशिया, जर्मनी, फ्रान्स, जपान, कोरिया, चायना, इंडिया, ऑल ऑफ देम विल फॉलो ऑन दिस, विच मीन्स that there is something unique. एक अशी इनरमोस्ट पर्सनॅलिटी आहे प्लाझ्माची, ज्याच्यावरून ज्याला आपण डायमेन्शनलेस कॅरेक्टर म्हणतो किंवा विंड टनल कॅरेक्टर म्हणतो आपण त्याला. त्यांनी यू कॅन प्रेडिक्ट, ऑल्दो इट इज नॉट परफेक्ट, यू कॅन स्टील व्हेरी वेल प्रेडिक्ट व्हॉट इज द कन्फाइनमेंट टाईम. आणि हाच तो एनर्जी कन्फाइनमेंट टाईम आहे. आणि तो टॉपवर जो इटरचा स्टार दिसतोय, दॅट इज द प्रेडिक्शन अराउंड 3.6 सेकंड. So if we can achieve this, then ITER will produce 500 megawatts of fusion power. त्या fusion power जे आपण electricity नाही बनवणार, that is just a demo, but it will be a very great moral booster, and it will teach all the scientists and engineers in the world how to control plasma, and that will be the turning point for fusion research. So क्विक लुक ॲट इंडियामध्ये काय सुरू आहे. अहमदाबाद, गांधीनगर, अहमदाबादच्या मध्ये ही प्लाझ्मा रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे. इट केम आउट ऑफ फिजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट PRL. आणि इथे 2 टोकोमॅक्स आहेत, एक सुपर कंडक्टिंग कॉइल्सवाला SST1 आणि कॉपर कॉइल्सवाला आदित्य टोकोमॅक. आणि हे त्यांचे पिक्चर्स आहेत. ऑल ऑफ यू, दोज यू आर इंटरेस्टेड आर व्हेरी वेलकम टू. आणि आमची मोठी आउटरीच टीम आहे जी तुम्हाला ऑनलाईन पण कनेक्ट करेल टू सी. सो देर आर मेनी ॲक्टिव्हिटीज हिअर. आणि इथे आता टेक्निकल वर्ड्स आहेत, सो डोंट हॅव टू वरी. पण इम्पॉर्टंट चीज ही आहे की प्लाझ्माची जी फ्लेम आहे त्याला मॅग्नेटिकली डायव्हर्ट करायसाठी डायव्हर्टर लागतो. प्लाझ्माला कन्फाईन करायसाठी मॅग्नेट्स लागतील. प्लाझ्मापासून ट्रिटियम परत रिजनरेट करायसाठी ब्लँकेट लागेल. फ्युएलिंग सिस्टम्स, गॅशियस फ्युएलिंग सिस्टमसाठी क्रायोजेनिक पंपिंग, पायपिंग, कॉम्प्रेसर्स, अशा गोष्टी लागतील. तर अशा सगळ्या फॅसिलिटीज त्याच्या भोवती बिल्ड केलेल्या आहेत. आणि सिस्टम्स आणि फॅसिलिटीजमधला हा एक्सपर्टाईज पाहून भारताला ITER कोलॅबोरेशनसाठी इन्व्हिटेशन होतं. आणि त्याच्यामध्ये एंट्री 2005 मध्ये झाली. तर ही ITERची साईट आहे. ITERचा एक तुम्हाला शॅडो फोटो दिसतोय. इट्स अ लार्ज 6 मीटर रेडियस, 30 मीटर स्टॉल असा तो, म्हणजे ऑलमोस्ट 10 मजली इमारती एवढा तो व्हेसल आहे क्रायोस्टॅट्स. त्याच्यामध्ये हा चेंबर, हा टोकोमॅक त्याच्यात बसलेला आहे. आणि त्याचं कारण हे आहे की सुपर कंडक्टिंग मॅग्नेट्स असल्यामुळे त्याचं टेम्परेचर -269 ठेवणं जरुरी आहे, बिलो 0. ते एक्सपोज, वी कॅनॉट डू एक्सपोजर टू रूम टेम्परेचर अँड दिस ॲटमॉस्फेरिक. म्हणून त्याला निर्वात एखाद्या व्हॅक्यूम फ्लास्क सारखं त्याच्यात ठेवलं आहे. फक्त हाच आहे की त्याच्यामध्ये तो थंड राहील आणि त्याच्यावर मॅग्नेट्सचं टेम्परेचर -269 राहील. आणि तो क्रायोस्टॅट, त्याचा आपण एक व्हिडिओ पाहू, दॅट वॉज सप्लाइड बाय इंडिया. सो ही त्याची स्टार्टिंग आहे. रिकजाविक समिट, गोर्बाचेव आणि रोनाल्ड रेगनच्या वेळेची. आणि हळूहळू हा एक मल्टीनॅशनल प्रोजेक्ट असा तयार झाला. 7 पार्टीज आहेत. शेअर्ड कन्स्ट्रक्शन है, विच मीन्स कि प्रत्येकाला काही ना काही सिस्टम्स बनाए. सबको कुछ ना कुछ एक कंपोनेंट, एक सिस्टम बनाना है और वहाँ पर डिलीवर करना है. कहाँ पर? फ्रांस में. सो फ्रांस, ये साइट फाइनली एग्री हुई थी 2005 में. और उसके बाद डिफरेंट सिस्टम्स को सब लोग
जापान, कोरिया, रशिया सब अपने अपने देश में बना के वहाँ भेज रहे हैं। इंडिया ने भी वही किया है। और इस तरह से 7 डोमेस्टिक एजेंसीज है, इधर यूएस, इधर कोरिया, इधर चाइना, इधर इंडिया। और ये जो टीम्स हैं, इधर इंडिया, इधर कोरिया, ये रफली 100-150 लोगों की टीम्स हैं जो अपने अपने देश में स्थित है। उनके अपनी सिस्टम्स हैं, उनका अपना बोर्ड है जो चीज़ों को अप्रूव करेगा, उनके साथ उनके देश की इंडस्ट्रीज़ है और उनके गवर्नमेंट ने जो लागत उसमें की उससे वो सिस्टम बन के वहाँ पर शिप करके वहाँ इंटीग्रेशन होने वाला है या हो रहा है। ईटर इज़ ए लाइव साइट, आप अपने मोबाइल पे भी कभी भी देख सकते हैं, www.iter.org। सो ये ईटर की बिल्डिंग है और ईटर भी एक टोकामैक रिएक्टर है एंड इसके लिए इसको ज़रूरी है कि वो एक लंबे पल्स तक ऑपरेट करे, ताकि फ्यूजन पावर बनने के बाद अगर ग्रिड को देना हो तो ऐसे पल्स पावर तो आप दे नहीं सकते, आपको एक स्टेडी पावर देनी पड़ेगी। तो लॉन्ग पल्स ऑपरेशन करना है, लार्ज पावर ऑपरेशन करना है और टॉप परफॉर्मेंस करना है। दैट मीन्स इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस होना चाहिए। जितनी पावर उसमें लगाई है 50 मेगावाट, उससे 10 गुना पावर 500 मेगावाट पावर मिलनी चाहिए। दैट इज द रिसर्च एम ऑफ रिएक्टर। सो ईटर जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का आउटकम गेस नहीं किया जा सकता। सो मे बी इट विल बी डू बेटर दैन दैट। सो कई टेक्नोलॉजीज है इसमें एंड इंडिया के लिए इन सारी टेक्नोलॉजीज में धीरे धीरे आत्मनिर्भरता लाना इम्पॉर्टेंट है और उस डायरेक्शन में कई कदम उठाए गए हैं। तो इंडिया के 9 मेजर मेगा पैकेजेस हैं और इसका हाइलाइट्स मैं आपको बताऊंगा। तो ईटर इंडिया ये एक्चुअल एग्जीक्यूशन एजेंसी है। इट इज़ अंडर IPR जो कि मेन इंस्टीट्यूट है और IPR इज अंडर DAE जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। सो इफ सिंपल क्वेश्चंस अगर पूछेंगे कि इंडिया का रोल है क्या अल्टीमेटली, तो ये कुछ सवाल हैं जो इन सिंपल वे आपको बता सकते हैं कि प्लाज्मा को हीट कैसे किया जाएगा। तो आयन साइक्लोट्रॉन हीटिंग सिस्टम्स इंडिया बना रहा है। शील्डिंग कैसे करेंगे, वहाँ से न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, तो उसके लिए इंडिया ने इनवॉल्व शील्डिंग प्रोवाइड किया है। मैग्नेट सुपर कंडक्टिंग कैसे रहेंगे, उनको जो वैक्यूम फ्लास्क में रखा जाएगा क्रायोस्टेट, वो इंडिया ने प्रोवाइड किया है। फिर क्रायोजेनिक सप्लाई भी इंडिया का है। फिर एक्सट्रैक्टेड हीट कहाँ जाएगी, तो इट विल फाइनली गो टू कूलिंग वाटर सिस्टम एंड इवेंचुअली टू एनवायरनमेंट। तो वो कूलिंग वाटर सिस्टम का लार्ज नेटवर्क, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स पूरा नेटवर्क है, वो भी इंडिया ने सप्लाई किया है उसके कंपोनेंट्स। तो अभी आपको कुछ हाईलाइट दिखेंगे। ये बॉक्स जो दिख रहा है आपको जिसमें ऐसी फ्रेम्स है, ये क्रायोस्टेट है, लेकिन ये क्रायोस्टेट ऐसे डिलीवर नहीं हुआ। इसका एक पीस आप देखेंगे, इसके 4 पीसेस थे, उसे एक गड्ढे में यानी पिट में पहले उतारा गया, छोटा पीस, मतलब एक पीस, छोटा नहीं, 1250 टन का पीस था वो, और फिर उसमें दूसरे पीसेस आएंगे, फिर मैग्नेट्स आएंगे, फिर वेसल आएगा, फिर वो बंद होगा और फिर सब वायरिंग पाइपिंग होके फिर टोकामैक रिएक्टर शुरू होगा। सो रिएक्टर के जो वेसल कंपोनेंट्स है वो यूरोप ला रहा है, मैग्नेट यूरोप और जापान US ला रहे हैं, क्रायोस्टेट हम जा रहे हैं, वेसल का कुछ हिस्सा हमारा है, कुछ यूरोप का है, कुछ कोरिया का है। तो इस तरह से ये सातों पार्टीज एक बड़ा ही हाईटेक काम करती है। डसॉल्ट सिस्टम्स का एक केटिया सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की सिस्टम्स है। आपके इंस्टीट्यूट में कितने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर कई लोग उसको यूज़ करते होंगे। तो देयर इज ए इंटीग्रेटेड, इंटरनेट से कनेक्टेड एक प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बताएं तो यहाँ जो बॉम्बे में जो
TIFR के पास में जो एक बड़ा सा जंक्शन है, वहाँ से एक अंडर सी केबल, रिमेंबर द इंटरनेट बिजनेस, इट गोज ऑल द वे अप टू आई थिंक इट गोज टू रॉटरडैम, और वहाँ से फिर वो सभी जगह, सो द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड एज यू नो बाय इंटरनेट, और हाई स्पीड, हाई क्वालिटी, हाई बैंडविड्थ फाइबर से ये सारे कंप्यूटर से एक दूसरे को जुड़े हुए हैं पूरे, मतलब 7 कंट्रीज के राउंड द क्लॉक इसमें ड्राइंग्स का काम चलता है। तो अगर आपने ड्राइंग मॉडिफाई किया तो मुझे दिखाई देता है, मुझे पता चलता है कि इस ड्राइंग में गड़बड़ी है, मेरी सिस्टम के लिए जगह नहीं है। तो ये जो क्लैश रेजोल्यूशन है ये इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। तो ईटर ने एक नई इंजीनियरिंग दिशा, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट लोगों से हमारे लोगों को मिलाया है, हमारी इंडस्ट्री को मिलाया है। आवर इंडस्ट्री केम टू नो अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, फ्रेंच सेफ्टी रूल्स विच आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से एक एक प्रोजेक्ट से कई चीज़ें सीखने मिली है लोगों को, और कई इंटर्न्स भी लोग काम करते हैं वहाँ। नीचे जो हम देख रहे हैं इनवॉल्व शील्डिंग है, जो ये शील्डिंग ब्लॉक्स यहाँ इंडिया में बने थे, दे आर हाईटेक बोरेटेड स्टील प्लेट्स जो यहाँ नहीं बनती, लेकिन एक दिन यहाँ बनानी पड़ेगी। दीज आर थिक 40 mm प्लेट्स, उसके रोलर्स नहीं बन सकते यहाँ पर, बिकॉज हम लोग अपने हिसाब से कॉमर्स करेंगे। इफ नो वन वांट्स थिक प्लेट्स देन हु विल मेक देम, बट दैट इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। यू हैव टू फाइंड व्हाट मोर यू कैन डू इन योर मिल एंड व्हाट क्रिएटिविटी कैन बी डन। तो हटके सोचना ये हमारे इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा। वी कैनॉट कैलकुलेट बिजनेस ऑल द टाइम, ठीक है। इस तरह से तो फिर निशा इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री कुछ करेगी ही नहीं। अगर आप एक ही टोकामैक बनाने वाले हो तो फिर कौन बनाएगा? दैट इज नॉट द लॉजिक टू बी। सो यू हैव टू नाउ ग्रेजुएट टू दैट लेवल ऑफ थिंकिंग जहाँ हाउ यूरोपियन कंट्रीज आर मेकिंग बिजनेस फ्रॉम द सेम थिंग। सो वी हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन, we have to ask right strategies. So what you are seeing is a part of the cryostat which was about to be installed. और ये यहाँ पर आप इंडिया का कुछ काम देख रहे हो। आपको ये बीच वाला पिक्चर दिख रहा है जहाँ पर 2 वेल्डर्स बैठे हैं, वहाँ पे उसको ध्यान दीजिए। उसके ऊपर एक राइट हैंडेड वेल्डर है, एक लेफ्ट हैंडेड वेल्डर है। वो क्यों है? संजय, कैन यू टेक? Probably not the same person. So मैं आपको इस बीच वाले पिक्चर के बारे बता रहा था। तो ये लार्ज प्लेट्स हैं और उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए, इसलिए उनको साइमल्टेनियसली ही वेल्ड करना पड़ता है। So even the industry had to devise new techniques, new things, new jigs, new fixtures, new non-destructive testing methodologies, ultrasound, X-ray, and so many other ways, phase arrays, to see whether that welding has fault, to make sure that the welding does not have distortion. It is one of the biggest problems and the biggest challenge in manufacturing. Good welding. That's it. In 2 words, the entire challenge is described. So here we encountered so many interesting things and saw this is the finishing of the involved shielding plates before they are shipping. So you can see a package completed by India. Here you can see completion of the top lid of the assembly. Now remember that these projects started in 2012, 13, 14, 15. We are seeing its fruits today, okay? But there is a lot of toil by all the players involved. As a project director, I can only say I was there and lucky, and I saw it as a witness, so fine. But remember that there is a terrific amount of work which I even don't know, but I know that it exists. It was done by great young people. They were fresh engineers. They joined us and with great enthusiasm they finished this job. So there is so much to do in mega projects. Here is a picture of a very complex object called cryogenics. ये यही प्लांट है जो ईटर के मैग्नेट्स को कूल रखेगा। So on the top you see cryo plant and storage, जो यूरोप और ईटर और उन लोगों का प्रोक्योरमेंट है, और बाद में ये पाइपिंग्स, ये बॉक्सेस, ये सप्लाई, ये हाई स्पीड रोटेटर्स, ये सारी टेक्नोलॉजी
हम लोगों को बनानी पड़ी, ट्राई करनी पड़ी, यहाँ लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ा, जापान में टेस्ट करना पड़ा, उसके बाद में बल्क मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वहाँ पहुँचाना पड़ा। सो ये क्रायोजेनिक्स का बहुत बड़ा सप्लाई हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। सो इसमें हमें डिज़ाइन करना पड़ा, फिर मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, सो मेनी थिंग्स, एंड दीज आर ऑल सो दिस इज़ वन ऑफ योर, एज यू वांटेड टू सी कि यहाँ क्या बन रहा है। So this was made in India, भारत में निर्मित, you will see, this is Inox CBA, हलोल, बड़ोदरा के पास में। So ITER has, India has completed the consignment of the cryolines also. Here is a picture of the complexity, the sheer complexity of things. और वहाँ पर कई players हैं, खाली हमारे contractors नहीं हैं, उन लोगों के भी हैं, उन लोगों के भी workers हैं. Now you can begin to see the difference between the quality of welder from Europe and from India, the practices, the technology. That is how you begin to grow. You begin to see a new world there. They work together. They have lunch together. They are at the same level. So that brings you not just scientists meeting in a conference. These are people who are fighting for, space, using instruments, going to lunch together. This is a different world. And that is what we got into. So here is a world-class achievement in the laboratory where we could produce more than 2,000 seconds of 1.5 megawatt RF power, ranging from 35 megahertz to 60 megahertz. It is of course a French company who provided certain component, but we also pitched in. We designed all the control circuitry, all the auxiliary systems, demonstrated it here, which would not have been possible even in their laboratory. So this shows you that हीटर को हीट करने के लिए जो सोर्सेस चाहिए उसकी कैपेबिलिटी हमारे पास है. एक और तरीका हीटर को हीट करने का प्लाज्मा को, वो है बीम इंजेक्शन, और उसके लिए भी इंडिया का एक सप्लाई है डायग्नोस्टिक न्यूट्रल बीम जो हीलियम ऐश को मॉनिटर करेगा. उसके लिए भी बहुत बड़ा R&D चल रहा है. एंड अभी ईटर इंडिया लैब में ये वाले एक्सपेरिमेंट्स चलने वाले हैं. RF एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो गए, अभी बीम के एक्सपेरिमेंट्स चलने वाले हैं. सो अगेन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट टू वर्क ऑन समथिंग हाई टेक. सो ये हमारे डिफरेंट पावर सप्लाईज एंड चेम्बर्स हैं, डायग्नोस्टिक बीम टेस्ट फैसिलिटी, जिसको पूरा यहाँ बनाने के बाद टेस्ट करने के बाद वहाँ भेजा जाएगा. और ये डायग्नोस्टिक शील्डिंग मटेरियल जो इंडिया ने इंडिया में बनाया और वो ईटर के मानकों को क्वालिफाई किया, डायग्नोस्टिक शील्डिंग मटेरियल. सो अब फ्यूजन रिएक्टर जो अगर हमको बनाना है तो हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़े. हम तो खाली 10% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. सो वी नीड मच मोर इन्वेस्टमेंट, मच मोर, एंड वी हैव टू हैव ए थीम जिसमें हम उसमें ग्रो करेंगे. तो एक बहुत बड़ा रिएक्टर, बहुत एक्सपेंसिव रिएक्टर है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इसे कोई फंड नहीं करने वाला, क्योंकि किसी को पता नहीं कि वो चलेगा या नहीं. इसलिए जितनी टेक्नोलॉजीज आज मिली हैं, जितनी बनी हैं, जितनी बन रही, उसका तुरंत यूज़ भी हमने पब्लिक लाइफ में करना चाहिए. तो हियर यू कैन सी कि प्लाज्मा प्रोसेसिंग है जो अभी चल रहा है. देयर इज अ बिग इंस्टीट्यूट व्हिच इज डूइंग दिस. जैसे पहले एंटीना के बूम्स बाहर से करवाने पड़ते थे, प्लाज्मा अभी यहीं हो जाते हैं. सो वी आर ग्रोइंग इन अप्लाइंग प्लाज्मा इन हेल्थ केयर. देयर हाईटेक सुपर कंडक्टिंग वायर्स, जिससे MRI अफोर्डेबल बन जाए, एक गरीब आदमी भी MRI आसानी से कर पाए. So that is where the direction to go. So this is where we need engineers and managers, innovation and startup, जो एक छोटी चीज़ को एक्चुअल डिलीवरी में कन्वर्ट करें, not in the lab or pilot or proof of principle, but to take it from proof of principle to actual delivery to a common man, जो मैंने आपको शुरू में कहा था अंत्योदय. Then as a volume neutron source, of course it is very important because हमारा थोरियम का जो बड़ा प्लान है जिसमें हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. हमारे पास बहुत बड़े थोरियम के रिजर्व्स हैं. अगर थोरियम से हम फिशन रिएक्टर्स जनरेट करेंगे, यानी थोरियम को अगर यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेंगे, तो वी कैन हैव ए बूस्ट इन फिशन रिएक्टर. टुडे फिशन रिएक्टर्स ऑक्यूपाई अबाउट 2% ऑफ आवर टोटल पावर. सो वी कैन ट्राई बूस्टिंग दैट.
देन ऑफ कोर्स हाई लेवल वेस्ट को लो लेवल वेस्ट में कन्वर्ट करना, ये भी फ्यूजन न्यूट्रॉन कर सकते हैं, क्योंकि केवल फ्यूजन ही है जो 14 MeV न्यूट्रॉन बना सकता है. देन एक्सप्लोर मेडिकल आइसोटोप्स एंड so many things. So these are the technologies in yellow that we are contributing already, and the red ones are the ones जो हमको डेवलप करनी चाहिए. अब डेमो यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन फ्यूजन रिएक्टर के क्या टारगेट्स होने चाहिए, तो उसका ब्रीडिंग, ट्रिटियम ब्रीडिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाई ग्रेड हीट एक्सट्रैक्शन होना चाहिए. दीज आर जनरल टारगेट. रेड वेस्ट मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए बिकॉज इट्स अ बिग रिएक्टर. सो दिस tritium breeding will require lithium material or lithium ceramics to be made, and it will also need a radiation resistant steel, मतलब reduced activation steel. तो वो इंडिया ने डिफरेंट इंस्टीट्यूट की मदद से उसको एक्चुअली बनाया, जैसे बाकी लोगों ने भी बनाया, हमने भी बनाया. वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन मेक दैट. सिमिलरली ये सब वेरियस प्रोसेसेस है मेटलर्जी के. आपके यहाँ पर आई डोंट नो टू टेल यू, वेरी गुड इंजीनियर्स कैन सी दैट फॉर देमसेल्व्स. सिमिलरली मटेरियल्स R&D, पाउडर मेटलर्जी, यहाँ पर लिथियम टाइटेनेट या लिथियम मेटा टाइटेनेट के पेबल्स बनाए हैं. ये पेबल से ही वो ब्लैंकेट बनने वाला है. ठीक. सो सफिशिएंट ट्रिटियम ब्रीडिंग और एक्सट्रैक्शन चाहिए ट्रिटियम का. सिमिलरली पावर जो जनरेट हो रही है उसका एक्सट्रैक्शन चाहिए. और ईटर ये अपॉर्चुनिटी है ये सब टेस्ट करने की, इसलिए हमने उसको फुल्ली यूज़ करना चाहिए. हमारे लोगों ने वहाँ जाके रिसर्च करके, यंग लोगों ने वहाँ पर, और अभी ईटर तो स्टिल टाइम almost 10 years to begin its show. So we have to prepare ourselves in a global way, in a systematic way. ITER as well as other projects में हमारे लोगों की maximum साझेदारी होनी चाहिए. So एक लेबोरेटरी में इसे बनाया जा सकता है, किया जा सकता है. कंट्रोल करना इज a challenge, फर्स्ट ऑफ ए काइंड है, इसलिए इसमें सरप्राइजेस रहेंगे, रिस्क रहेंगी, अंडर एस्टिमेशन रहेगा, गलतियाँ होंगी. लेकिन द प्रोग्रेस ऑफ ए जनरेशन, लेट मी टेल यू, समवन सेड, इज कनेक्टेड टू हाउ मेनी मिस्टेक्स वेयर अलाउड टू बी मेड बाय यंग जनरेशन. तो अगर यंग जनरेशन जितनी मिस्टेक्स करेगा, जितनी बार वो अनसक्सेसफुल रहेगा एक्सपेरिमेंट्स में, वही उसका चांस है आगे बढ़ने का. If you don't make mistakes, if you don't do experiment, if you don't try, you will not get there. So that is where we have to see कि first of a kind में ये सब problems आने ही वाले हैं. So we should not be afraid of criticism. People are going to criticize, but then there is a limit. If we know reality internally that this is how things happen, then this is how it will have to be. We don't know what is the use of these things. Who predicted कैलिफोर्निया के उस डेजर्ट में, रेगिस्तान में एक एलिमेंट मिला था, म्हणजे तो कंडक्टर ही नव्हता, यूजलेस फॉर वायर्स, आणि इन्सुलेटर ही नव्हता, यूजलेस टू इवन मेक ए ग्लो फॉर इलेक्ट्रिशियन. बट फेयरचाइल्ड डिड नॉट थिंक so. So the important thing is the semiconductor, and today it is in your hands. You can't do without it. After so many years, those mobiles, those things have changed. They have penetrated the society so much that you cannot even predict. Not only business, social, and they have percolated all the way down to personal way of living. If you look at it in 100 years ago, in 2001 we were discussing, so we saw a paper which was published in 1900. This is the proceedings of the Royal Society. तो उसमें क्या था? People had not imagined that there will be cars. तो लंदन के रास्तों से घोड़े की लीद कैसे साफ करेंगे, इस पर पेपर था. वो क्यों? Because we projected, those people projected that there will be only cheapest option will be horse cars. So if you now visit say Vienna or something, I have taken a photograph of that also.
there's a very powerful horses, but उन horses के पीछे वो लीड फैले ना इसलिए ऐसी थैली लगी होती थी. So you see, we think something, but no one imagined that there would be cars. Today also, no one imagines that there will be electric cars, and you will see what happens. No one imagines that hydrogen economy, but you will see what happens. So you see, we must never give up against this random, off-the-cuff, hip-shooting, armchair criticism. ये क्या है तो आपको तो कभी deliver होने वाला नहीं. Never. Ask yourself, is this a new technology? Is this something different? Is this something useful? And ask yourself, what if it works? Then you will see a different world. So we will have to gradually grow into not just a scientist, a manager, but also a great strategist, a visionary. These are the number of companies that worked with us. They made this happen in India. So once again I say that India is showcasing mega science. You can see this Vigyan Samagam poster 2019. I am saying that while we need to take science to people, we need to bring people to science. So on the right hand side जो आपको दिख रहा है वो BRFST मतलब Board of Research in Fusion Science and Technology ने जो 2007 से लेके 2016 तक प्रोजेक्ट्स दिए थे उसका वो प्रोफाइल है. उसमें डिफरेंट ब्लू और ये जो बार्स आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं वो स्टेट्स हैं. We have covered so many states और डिफरेंट स्टेट से इतने सारे प्रोजेक्ट्स आए थे. और ये राइट बॉटम में जो आप देख रहे हैं रेड कलर के कॉलम्स, those are disciplines. उस डिसिप्लिन में उतने प्रोजेक्ट्स और उतना बजट दिया गया था. तो फ्यूजन के through this project we came to talk to universities, and this is such a high visibility project. आप उसको directly YouTube पे भी देख सकते हैं. I will request someone to so this is a slide for my guru, Dr. Ms. Kamal Singh. So here we started 2007, 2012, 2009. We have now a new project director, Mr. Ujjwal Barua. And without their dedication, it wouldn't have been possible. But key point in that is Professor Pradyuman Kaur was the founder director of IPR, and his article on fusion power, who needs it, is very famous. You can look at that. And my point is that without the blessings of the Guru, nothing was worthwhile was ever accomplished. So thank you for all your for being here, for listening. I hope that you found it useful, and you will probably see some of the videos. Can you just show the ITER drone? So here is a video taken by drone of the ITER site in France. रेड बिल्डिंग के बाजू में जो वो बिल्डिंग है, दैट इज इंडियाज बिल्डिंग, द क्राइस्टचर्च बिल्डिंग, दिस वन. ये टोकामैक बिल्डिंग है जिसमें टोकामैक रिएक्टर रहेगा. ये पावर सप्लाई स्विच यार्ड है. वो पीछे रेड में हमको पीएफ कॉइल बिल्डिंग दिख रही थी. वो कॉइल्स इतनी बड़ी है कि वो साइड पे ही बनानी पड़ेगी. ये असेंबली बिल्डिंग थी. सो वी आर एंटरिंग द असेंबली एरिया. ये हम वेसल सेक्टर का एक हिस्सा देख रहे हैं, वैक्यूम वेसल का. और ये जो पीछे बड़े पिलर्स है उसमें वेसल को खड़ा किया गया है. वेसल के सेक्टर को ऐसे 9 सेक्टर्स रहेंगे. जो आपको ये येलो होल्स दिख रहे हैं वो ब्लैंकेट के होल्ड पॉइंट्स हैं.
दूसरा चला दीजिए। सो ये क्रायोस्टैट एक इंडिया की डिलीवरी में अब एक ही एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, और वो क्रायोस्टैट के इंस्टॉलेशन का एक हिस्सा है। कंप्लीशन सेरेमनी, हाँ बस इनॉग्रेशन। अच्छा इनॉग्रेशन वाला ठीक है, दिस इज दूसरा वाला ले लीजिए। ये तब जो क्रायोस्टैट वर्कशॉप बिल्डिंग बनी थी तब उसका इनॉग्रेशन है। उसके बाद में क्रायोस्टैट बना वो वाला एक मिनट देख लेते हैं एंड देन वी कैन वाइट। आई थिंक आई हैव ओवरशॉट टाइम सुजाता जी एंड पेशवी जी, आई एम वेरी सॉरी। डॉक्टर बर्नार्ड बीगो ईटर के डायरेक्टर, अब वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, अभी दूसरे डायरेक्टर हैं वहाँ पर, और ये टीम है उस समय की। वहाँ साइट पर जाने के लिए यू हैव टू बी फुल्ली इन दैट पर्टिकुलर ड्रेस, बिकॉज वहाँ पे वो शूज़ और वो सब सेफ्टी शूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। What brings us together in this workshop is our joint commitment to this unique goal, building a machine, ITER. I'm a bit of an outsider to this project, but in some members I'm also an insider to this project. ये इंडिया के एम्बेसडर टू फ्रांस। Going to be on time to deliver the cryostat. ये ईटर इंडिया के नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर। For us, we are handing over cryostat base section and load cylinder of the ITER program. We thank ITER India for providing us an opportunity to contribute toward this breakthrough project. More than 60% of the cryostatic vessel is finished. So we are celebrating a very important milestone. It's also an important milestone. डॉक्टर कारकोटकर को जानते ही। I remember it's the first time I meet you at the C headquarters. Do you remember in Paris? You come to me to say India need a lot of new energy. Could you support in order to develop it? And I say yes, but maybe you could help us also to support ITER. वाइन बॉटल एक्सप्लोर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और ये सारे वीडियोस आप YouTube पे आपके मोबाइल पे देख सकते हैं। आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स वन कैन डू, व्हाट आर द चैलेंजेस, हु आर द पीपल इन्वॉल्व, हाउ टू कनेक्ट टू देम। और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपके सिलेबस में, आपकी नोट्स में उसको ढूंढिए, आपको मिलेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स, उसके जवाब और उसकी क्यूरियोसिटी, उसको ज़िंदा रखिए, क्वेश्चंस पूछिए, परेशान कर दीजिए, सही सवाल पूछ के, साइंस के, इंजीनियरिंग के, क्यूरियोसिटी के, तभी आप बढ़ेंगे आगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। माय सैल्यूटेशंस टू माय गुरु एंड माँ सरस्वती। Thank you so much, sir. I request our dignitaries to please come forward and take their seats on the dais. जी sir, for 5 minutes.
Thank you, sir, for an enthralling and extremely informative lecture. Using technology with a moral conscience, optimum use of time, focus on project management, the major role played by plasma in our incredible universe, the working of the fusion reactor, India's amazing contribution to ITER, thinking out of the box and beyond, constant competition to stay abreast with foreign technologies. We also learned that mistakes and failures are important to make us learn new ways of doing things. Nothing is impossible in today's times. I'm sure everyone present here today has really enjoyed this lecture. Thank you once again, sir. May I now request the IQAC coordinator and head of the Department Botany, Dr. Pitambar Humne, to propose a vote of thanks. Thank you, madam. Good evening. Honorable dignitaries on the dais, off the dais, special invitees, members of the management, research scholars, colleagues, and my dear students. It is my proud privilege to have been asked to propose a vote of thanks. First and foremost, I wish to thank our chief guest and keynote speaker of today's function, Senior Professor SHISHIR Despande sir, for having accepted our invitation and deliver an excellent and informative lecture on occasion of Golden Jubilee Science Lecture Series on the topic Role of Fusion Energy in Atmanirbhar Bharat ITR project and beyond, as well as releasing our Golden Jubilee Souvenir Yatra. Thank you, sir. I wish to express my sincere thanks to our President, Dharampet Education Society, Nagpur, Honorable Advocate Ullas Aurangabadkar sir, for his constant support in all activities taken up by the college and for sparing his valuable time and presiding over the program. Thank you, sir. I must mention my deep sense of appreciation to our Vice President, Dharampet Education Society, Nagpur, Honorable Shri Ratnakar Kekatpure sir, for gracing the occasion and accepting our invitation. Thank you, sir. I also wish to place on record my special thanks to the Secretary, Dharampet Education Society, Nagpur, Honorable Shri Mangesh Patak sir, for being present here today. Thank you, sir. I would like to seize this opportunity to place on the record my heartfelt thanks to our respected principal, Dr. Akhilesh Peswe sir, for being our backbone and helping us in every way possible in beginning out our Golden Jubilee Souvenir Yatra and organizing this lecture. Thank you, sir. Without your valuable guidance, we could not have managed to achieve this mammoth task. My special thanks to the entire souvenir team, especially Mrs. Sujata Ali of English Department, Ruma Kapre Madam of Computer Science Department for working side by side with me in this entire process of the compilation of this souvenir, in editing, setting, collection of messages, etc. And Miss Vishaka Kaskedikar for checking and editing the entire Marathi messages, as well as all the members of Souvenir Committee who were involved in bringing this task into the fruition. Thank you all. I also wish to thank Vice Principal, Junior College, Mrs. Vinaya Kaskedikar Madam, and Supervisor, Junior College, Mrs. Shobha Jhalke Ma'am, for their constant support in organizing this event. We have been fortunate to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of this great institute. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks assigned to them. Thank you very much, you all. My very sincere thanks to all the invited guests, media persons, research scholars, and alumni for honoring our invitation and coming here for the lecture. Thank you very much. Last but not the least, I wish to thank the non-teaching staff of our college and very dear students for their cooperation and support, and all those
who were directly or indirectly involved in making this event a huge success. Thank you very much, you all. Hand over to Madam. I declare the program has now concluded. We will be concluding the program with the recital of the Pasayadan. May I now call upon Mrs. Kushali Korape to do the same. Please, all of you stand up for the Pasayadan. आता विश्वात्मके देवे येणी वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान हे जी खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूतां परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरिताचे विश्वधर्म सूर्ये जो जीवांची रतो तेला प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव भूलते जे अर्णवा पियुषांचे चंद्रमेचे अलांछना मार्तंडचे पापहीना ते सर्वाही सदा सज्जना सोय रे होतो किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होऊन तीही लोकी भजी
Thank you all once again.